Hello everybody, this is Arshad Ansari and you are watching Arshad's Library. Today we're gonna review the book which is written by Napoleon Hill, and the name of the book is, it is one of the very famous book, Think and Grow Rich. So this is the cover photo of the book and it is written by Napoleon Hill, and the first statement which this book says is that there are no limitations to the mind except those we acknowledge. Now first of all we will learn about the author, that who was he, where he was born. Napoleon Hill was basically born in United States of America. He was an American writer and one of the most famous writer in American history, and moreover he was very inspired by Andrew Carnegie leadership style, his whole lifestyle, his success and his money making formulas and all the things. So ये उनसे काफ़ी इंस्पायर थे. तो उसी के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, दिस थिंक एंड ग्रो रिच. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द बुक. This book contains 15 chapters, starting from the introduction is the first chapter. The main first chapter is desire and the last chapter is how to outwit the 6 ghosts of fear. So this is it contains 15 chapters, but let me tell you there are 13 steps to get the riches. Riches का मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो. रिचेस का मतलब है इसके अंदर कि आपका ओवरऑल सक्सेस, दैट हाउ यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, हाउ यू कैन लिव योर लाइफ, हाउ यू कैन बैलेंस योर लाइफ, हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ, how you can maintain a work life balance, and how can you be a overall total quality people, in the category of total quality people, how you can become a TQP. So if you want to know, if you want to work on that phenomena, then you must read this book. So there are 13 steps, like let me tell you something, like desire, faith, auto-suggestion, organized planning, decision, persistence. So all these things are given over here, which are 13 steps. And I think personally that you all must read this book, because many times what we do ना, कि हम लोग किसी एक चीज़ पे इतना फोकस करते हैं कि हमारी दूसरी चीज़ें चली जाती हैं. कि हमें जो करना चाहिए ना, हम सोचते हैं कि ये भी सही है कि फॉर योर ड्रीम्स और फॉर योर गोल्स यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन. डेट इज़ ट्रू, बट लाइफ जो होती है वो बैलेंस होती है. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव सम टाइम टू द फैमिली ऑल्सो, एंड यू हैव टू एंजॉय योर सेल्फ ऑल्सो, एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो. सो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसके लिए तो आपको एक पूरा TQP मतलब टोटल क्वालिटी पर्सन बनना पड़ेगा. तो उसके लिए वो कैसे एक्वायर करें वो रिचेस, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, कैसे हम ऐसे इंसान बने, देन उसके लिए एक बहुत अच्छे से इन्होंने 13 स्टेप्स के अंदर बताया 1 by 1. एंड लेट मी सजेस्ट यू दैट ये बुक 20 से लेके 30 जो इस एज के ग्रुप के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज इस एज के लोगों को कैरियर के लिए एक थोड़ी फिक्र होती है कि यार अब मेरा कैरियर है पूरा, आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मैं कैसे अचीव करूँ वो. तो क्या होता है ना, सोचने सब हैं बट अचीव करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है. तो उसके लिए जो एक स्टेप्स हैं, उसके लिए एक पूरा क्राइटेरिया है इसके अंदर उन्होंने बताया है. एज अ डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन पे काफ़ी फोकस है इस बुक के ऊपर. एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर. इफ़ यू रीड दिस यू विल फाइंड इट रियली वर्थ रीडिंग इट, एंड आई थिंक यू ऑलमोस्ट रीड दिस बुक. कोई भी रीड कर सकता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई बड़ा हो या ओल्ड एज हो या सीनियर सिटीजन हो, बट मोस्ट प्रेफरेबल इट इज़ फ्रॉम 20 to 40. क्या होता है ना, एक बड़ी एज के बाद इंप्लीमेंट करना चीज़ें मुश्किल होती हैं, बट 20 to 40 यू कैन इम्प्लीमेंट दिस बुक इन योर लाइफ. सो दिस इज़ ऑल इन दिस बुक, कि आपको कैसे आप अपने गोल्स को इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल थिंग्स के तरीके से इन 13 स्टेप्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो. और स्टार्टिंग में इस बुक के है कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के पास एक बंदे को काम करना था उनके अंडर में, तो उसने कैसे उनके अंदर, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अपने टाइम के, तो उनके अंदर उसने कैसे डिज़ायर का यूज़ करके, कैसे उसने एक विजुअलाइजेशन का यूज़ करके उसने अपने आप को उनके अंडर काम किया, उनके साथ काम किया. तो आई थिंक कि आपको इससे प्रैक्टिकल नॉलेज और कुछ हाइपोथेटिकल नॉलेज ही मिलेगी, जिसको आपको थोड़ा समझने में तो शुरू में दिक्कत होगी कि यार ये कैसी बात है कि विजुअलाइजेशन करके कुछ भी अचीव हो जाए, है ना, कि सोचो, इमेजिन करो और उसके बाद अचीव हो जाए. बट यू विल फाइंड इट कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो, ये एक फैक्ट भी है. तो आई थिंक उसके ऊपर और उस प्रिंसिपल के ऊपर तो दिस बुक सूट करती है. So this is all in this book यार. I have purchased this book from Crossword, so it cost me 250 rupees. You can purchase it from Amazon or Flipkart. I will give you the link in the description box so you can check it out there. And nothing else, this is all in this book, and I hope you like the video. So और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसकी रिव्यूज़ दी हैं. You can search on my YouTube channel Arshad's Library. And moreover, this is here I want to conclude and nothing else. Okay, please read it and try to implement it, because actions are more important than the words.
So this is all. Thank you so much for watching this video, and I hope this book will give you some insight to reach towards your goals, towards your dreams. Thank you so much for watching this video. If you like the video, press the like button and subscribe the channel to know the reviews of more books in the future. Thank you. Thanks a lot.